Question number 19. A child has a die whose 6 faces. वो डाई पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं यानी कि उसके फेसेस पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं. एक तो ए लिखा हुआ है एक फेस पर, और दूसरे फेस पर बी, और तीसरे पर सी, और डी, ई और ए. 6 फेसेस होती है डाई के, हम जानते हैं 6 फेसेस होती है डाई के. यहाँ पर अगर हम डाई बनाएंगे, डाई कुछ इस तरह का होता है और इसके 6 फेसेस होते हैं. कितनी होती है? 6 फेसेस. और जो इन फेसेस पर नंबर्स है वो लेटर, उन पर नंबर्स नहीं, उन पर लेटर्स है, यानी कि इंग्लिश लेटर्स. एक तो ये है ए बी सी डी ई और ए. द डाई इज़ थ्रोन वंस. डाई को एक बार वंस यानी कि रोल किया गया, या डाई इज़ थ्रोन वंस. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमको ए मिले? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमको ए मिले? सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. सो यू कैन राइट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. Outcomes that equals to 6. As there are 6 faces in the die, so total number of possible outcomes equals to what? 6. And you have to, what you have to find? You have to find what is the probability of getting A. If we roll a die or if we throw a die once, what is the probability of getting A? So you can denote the event. Let E denotes the event. E denotes the event. Denotes the event of getting a letter E. Getting a letter E. Getting a letter E. यानी कि जब हमने इस डाई को रोल किया, हमको वहाँ से लेटर ए मिले. हमको वहाँ से लेटर ए मिले. हमने वो किससे डिनोट किया? वो हमने ई से डिनोट किया. वो हमने ई से डिनोट किया. अब इसके बाद फर्दर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि हमको ये लेटर ई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लेटर ई आए. आप देखो यहाँ पे. अब नंबर ऑफ, यू कैन टेक नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई. हाउ मेनी आउटकम्स आर इन द फेवर ऑफ दिस E? How many outcomes? Yes. As there are, when you look at it here, there are 2 times E. That is, one is this E and another is this E. So, number of outcomes favorable to this E equals to 2. Therefore, probability of, you have to calculate probability. Therefore, probability of what? Probability of E equals to number of outcomes favorable to E divided by total number of possible outcomes. That is 2 divided by 6. That is 1 divided by 3. You can take this as 1 divided by, because 2 1 is 2, 2 3 is 6. So you get final probability as 1 by 3. Which means that probability of getting this letter A is 1 by 3. Is 1 by 3. Whether you get this? Okay. Now here, this was part first of this question. This was part first. In part second stated that what is the probability of getting letter D? Getting letter D. So you can first of all denote the event letter D. As you look here, there is only one letter which is only one outcome favorable to this. That is only one letter D. So so you can take in part second. First of all, denote the event. Let denote the event by F. Let F denotes the event. Denotes the event. The event of getting a letter D. Letter D. So I denote the event of getting a letter D. Now, number of outcomes favorable to this F. How many outcomes are there which are in the favor of F? As there is only one outcome which is in the favor of this F. So you can take number of outcomes
outcomes favorable to F equals to what? 1. There is only one face on which there is letter D. So number of outcomes favorable to F equals to what? 1. Therefore probability of F equals to what? That equals to number of outcomes favorable to F divided by total number of possible outcomes. That is 1 divided by 6. This is the required probability. In this way we have completed this question number 19.